अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ स्टडी पे। तो जो स्टडी है उसको किस तरीके से हम अपने लिए ईजी कर सकते हैं, हम अपने लिए कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं या उसको अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। तो इसमें कुछ आज डिस्कशन आपके साथ होगी। बिफोर यू स्टडी यू शुड बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो राइट होना चाहिए एंड यू शुड बी काम, यू शुड बी इन सोलेस एंड पीस. Nothing should be worrying you. Psychologically you should not be under tension. You must be emotionally stable. आप जो है वो mentally, physically और psychologically जो है वो आप present होने चाहिए. आप एक task को understand करने के लिए आपकी जो है वो सारी efforts जो हैं वो होनी चाहिए. और इसमें socially अगर हम बात करें तो you should clear all the social problems of the home. आप घर पे जो है वो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं या आपको चिल्ड्रन की प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंटल केयर है दैट में स्टैंड अगेंस्ट प्रॉपर कंसंट्रेशन, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी कंसंट्रेशन या आपकी अटेंशन को जो है वो डाइवर्ट कर देती है, तो वो भी आपका एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो नहीं बन सकता. तो स्टडिंग डिमांड्स कंसंट्रेशन एंड यू मस्ट गिव दिस. ठीक है, तो अभी तक अभी जो हमने बात की है वो ये कि स्टडी जो है वो अपनी इफेक्टिव बनाने के लिए उसके लिए एक ही चीज़ डिमांड करती है, वो है कंसंट्रेशन यानी इन्हमाक यानी आपकी जो है अटेंशन और तवज्जो. इसके बाद अगर हम बात करें इसमें एनवायरनमेंट की, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है कि दी एनवायरनमेंट वेयर स्टडी टेक्स प्लेस मस्ट बी कंड्यूसिव. मैंने पहले अर्ज किया कि कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए. इट मस्ट बी क्लीन, environment must be well organized, pleasant and noiseless. अगर हर तरफ जो है वो नॉइस होगा, environment pleasant नहीं होगा, conducive नहीं होगा, तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो डिफेक्टिव हो जाएगा. फिर उसके बाद एक और टेक्निक इसमें है कि हैव द राइट इक्विपमेंट. यू नीड सर्टन पीसेस ऑफ इक्विपमेंट फॉर स्टडी. विदाउट द राइट इक्विपमेंट स्टडी विल बी डिफिकल्ट. कि अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है लर्निंग के लिए, स्टडी के लिए, तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. द राइट इक्विपमेंट विल मेक स्टडी मोर अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव. अगर इक्विपमेंट आपके पास लर्निंग के लिए प्रॉपर होगा, आपकी स्टडी प्रॉपर होगी. अगर कंसंट्रेशन प्रॉपर होगी तो आपकी स्टडी जो है वो प्रॉपर होगी. अगर आपकी कंसंट्रेशन, आपका एनवायरनमेंट, आपका इक्विपमेंट वो इफेक्टिव होगा, प्रॉपर होगा, तो फिर आपकी जो लर्निंग है, जो आपकी स्टडी है, स्टडी स्किल जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी. तो जो बेटर इक्विपमेंट है, ये क्वेश्चन पैदा होता है कि वो कौन से हो सकते हैं. बेटर इक्विपमेंट में पेन है, पेंसिल है, पेपर है, डिक्शनरी है, रेलेवेंट टेक्स्ट बुक्स हैं, नोट्स हैं, टेप रिकॉर्डर्स है, कैसेट्स हैं. ठीक है, आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, रूलर है, कैलकुलेटर है. सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है वो वेरी करता है कि आप जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं उसमें आपको किस किस्म का रेलेवेंट इक्विपमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है. और कंप्यूटर इक्विपमेंट हो सकता है, टेबल एंड डेस्क है, बुक शेल्फ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. डिक्शनरी जो है उसकी अगर हम बात करें, अगर हम लिटरेचर की या हम जो लिटरेरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें, तो डिक्शनरी इज़ द स्टूडेंट्स बेस्ट कंपेनियन. इट इज़ बेस्ट इक्विपमेंट फॉर लर्निंग टू इम्प्रूव योर स्टडी स्किल्स. You need a dictionary when studying. A dictionary will supply you with meanings of new words, spelling of words, parts of speech, whether the word is noun, verb or adjective, the way the word is pronounced, यानी आपकी pronunciation, आपकी vocabulary, आपके parts of speech, आपकी जो grammatical skills हैं, आपका origin of word जो है वो, और मैनी मोर थिंग्स वो आपको डिक्शनरी से जो है वो पता चलता है. इसलिए डिक्शनरी जो है इज़ बेस्ट एंड बेस्ट कंपेनियन ऑफ स्टूडेंट. तो इसमें एक और जो चीज़ है कि जो अब हम स्टडी कर रहे हों तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट टू डू व्हाइल स्टडिंग. स्टडी टाइम शुड बी बिजी टाइम. स्टडी टाइम शुड ऑल्सो बी एन एक्टिव टाइम. और जो एक स्टडी करने वाला जो स्टूडेंट है या एक जो रीडर है जो स्टडी स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है, ही शुड बी एजाइल, ही शुड बी एक्टिव. और उसके जो स्टडी टाइम है दैट शुड आल्सो बी एक्टिव. व्हाट शुड यू बी डूइंग व्हाइल स्टडिंग. स्टडी करते हुए आप क्या कर रहे होंगे? रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टू स्टडी. यानी ये आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन, कि जो आप रीड कर रहे हैं उसको आप अंडरस्टैंड भी करें.
اور اگر آپ جسٹ ریڈنگ کر رہے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ وداؤٹ کمپریہینشن اٹ از اونلی ریڈنگ ناٹ کمپریہینشن ناٹ انڈرسٹینڈنگ. دوسری چیز ہے فارم یوزفل نوٹس کہ آپ جب ریڈ کر رہے ہیں میک شارٹ نوٹس میک یوزفل نوٹس انڈر لائن امپورٹنٹ پوائنٹس جو پوائنٹس جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ ہیں ان کا کوہرنس ہے ان کا ربط ہے ان کا ریلیونسی بنتی ہے یہ امپورٹنٹ ہیں یہ اس اسٹڈی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں آپ ان کو انڈر لائن کرتے جائیں. Do some practices, do some practice activities, some tasks or some exercises to ensure that learning is taking place. If you are just only reading and you are not understanding, you are not doing the practice of comprehension, you are not making notes, you are not applying the skimming and scanning to find the main theme or gist or main idea of your study, then it means that you are only reading. ٹھیک ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے اور آپ جو ہے وہ اسٹڈی نہیں کر پا رہے آپ ریڈنگ کر رہے ہیں آپ اسٹڈی نہیں کر رہے. پھر ہے جس میں اسیس یور سیلف پیریڈیکلی بائی ڈوئنگ واٹ یو آر لرننگ ٹو ڈو کہ وقفے سے آپ اپنے آپ کی اسیسمنٹ کریں اپنی ویلیویشن کریں کہ آپ کیا لرن آپ نے کیا ہے آپ کیا لرن کر رہے ہیں اور آپ کیا لرن کریں گے. ٹھیک ہے وٹ ہیو یو ڈن وٹ آر یو ڈوئنگ اینڈ وٹ ول بی ڈن وٹ ول یو ڈو کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں گے. ریلیکس ان بٹوین اسٹڈی پیریڈ ٹو ریفریش یور برین. آپ کنٹینیو اسٹڈی کرتے چلے جائیں گے یو ول گیٹ فیڈ اپ. آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں آپ چیز کو اسٹڈی کریں اس کو انڈرسٹینڈ کریں کمپریہینڈ کریں اور اپنے برین کو آپ ریلیکس کریں آپ اسے ریفریش کریں. آلویز بی ایکٹیو وین اسٹڈیئنگ ڈو مینی تھنگس رائٹنگ لسننگ ریڈنگ اسپیکنگ ٹو یور سیلف لسننگ ڈرائنگ لیبلنگ ایکٹیویٹیز کیپ یو اویک. تو یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں جب بھی آپ لیبلنگ کر رہے ہو ریڈنگ کر رہے ہو اسپیکنگ کر رہے ہو لسننگ کر رہے ہو آپ رائٹنگ کر رہے ہو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اس میں جو ہے وہ جب آپ اپنے 5 سینسز سے کام لیں گے تو پھر آپ کی جو اسٹڈی مٹیریل ہوگا یا جو آپ ریڈنگ کر رہے ہوں گے لسننگ اسپیکنگ کر رہے ہوں گے وہ ایک افیکٹو اس کے جو ریزلٹس ہیں جو اس کے آؤٹ کمس ہیں وہ پازیٹیو نکلیں گے. اس میں لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے know what you have learned. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے what you have learned آپ نے کیا سیکھا and you have not learned what you have not learned کہ آپ نے کیا نہیں سیکھا اور کیا سیکھا ہے. یہ ڈفرینس جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آپ کو اپنے بارے میں یہ اس کا نالج ہونا چاہیے کہ جو آپ چیز آپ کو آتی ہے جو آپ کو چیز جو ہے انہیں سیکھی ہوئی ہے اور جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ کچھ سجیشنس تھی کچھ آئیڈیاز تھے کہ جن کو ہم مد نظر رکھ کے ہم اپنی اسٹڈی اسکلز جو ہیں ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بیٹر انداز میں پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اسپیشلی کالج اسٹوڈنٹس کے لیے اور بی ایس اسٹوڈنٹس کے لیے جو انگلش کلاسز لے رہے ہیں ان کے لیے یہ ٹاپکس جو ہیں وہ آنے والی ویڈیوز کے اندر جو ہے انشاءاللہ بہت زیادہ افیکٹو ہوں گے. تب تک اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ.